हमारे साथ अमेरिका के डेलावेयर जहां जो बाइडेन का घर जहां पर माना जाता है, वहां डेलावेयर से डॉक्टर मुक्तेदार खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, और इनका खुद का एक चैनल है जिसका नाम है कन्वर्सेशंस, और इनको आप अक्सर उस पर सुनते हैं और अलग अलग चैनल्स पर जाते हैं। डॉक्टर मुक्तेदार खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग on a morning when America goes to polls. What would you really say to this elections of 2024 in America? How is it different from the elections which happened in 2020? Do you find it any different? Yes, thank you very much, Neelu, for having me on your channel. I'm delighted that you have your own channel. और आपके सुनने वालों को मैं ये बता सकता हूँ, of all the journalists I talk to, I think Neelu is the hardest working one. She works the hardest, definitely asks some of the toughest questions, and she talks to people on both sides of the issue. So that is very nice. So I think this issue is critical because देखिए बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि in democracies you can't say अरे यार मुसलमान बहुत पावरफुल हो गए, उनको दबाओ। अब ये नहीं कह सकते आप पब्लिक में इस तरह की चीज़ें, बट सोच सकते हैं और वोट डाल सकते हैं उस पैटर्न पे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज इन द वेस्ट, इमिग्रेशन को लेकर, कल्चरल इश्यूज को लेकर, द राइट विंग जो है, क्रिश्चियन वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज, दे आर कल्चरली बहुत परेशान है वो कि हमारा रिलीजन ख़त्म हो जा रहा है, पीपल आर बिकमिंग एथीस्ट, एंड देन फिर ये जो LGBTQ के वजह से कल्चर बदल जा रहा है, इमिग्रेशन के वजह से कंट्रीज का रंग बदल जा रहा है वाइट कंट्रीज जाके ब्राउन कंट्रीज हो जा रहे हैं। 2017 में माई सन गॉट इनटू हार्वर्ड। दैट वाज द फर्स्ट ईयर वेयर हार्वर्ड में वाइट माइनॉरिटी में आ गए। तो हमारे अच्छी चीजें भी ये लोग ले रहे हैं, इस तरह की सोच है, बट यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट? इन ए डेमोक्रेसी इट्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट। सो ट्रम्प ने वो सारे जो टबू से वो तोड़ के ही एक्चुअली टॉक्स लाइक दैट, बट दिस इज द लास्ट चांस फॉर दोस उस तरह के वैल्यूज वालों के लिए कि कुछ परमानेंट चीज कर दे। जैसा कि फॉर एग्जांपल कल ट्रूडो ने अनाउंस किया कि वो इमिग्रेशन इतना काट रहा है कि ही इज गोइंग टू रिड्यूस इन 3 years Canada's population because there is so anti-immigration sentiment, and this is across Western countries. So for the conservatives, this is the last chance to make fundamental changes, values को लेकर, identity को लेकर। जहां तक के लिबरल्स वगैरह है, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि दे आर थिंकिंग के मतलब इट इज वेरी अनलाइकली बट सम थिंक के ये आखिरी इलेक्शन होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत कर देन ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर डेमोक्रेसी। इस तरह से वो लोग जेन्युइनली परेशान है, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अमेरिका में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, फौजी से लेके हर बंदे तक, वी स्वेयर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू द प्रेसिडेंट। तो if he makes anything demand which is unconstitutional, I think फौज वगैरह भी रिफ्यूज कर देगी। So I don't see that danger, but there are liberals who are very worried। और उनके लिए ये जो women's की बॉडी की कंट्रोल पे जो लड़ाई चल रही है ना, abortion, that is a big issue। तो एक अजीब फिनोमेना हो गया है कि डेमोक्रेट्स सारी यूरोप में भी, यहाँ पे भी जितने भी लेफ्ट ऑफ सेंटर है, वो राइट की तरफ मूव हो गए हैं ऑन पॉलिसीज। इतना मूव हो गए हैं कि फर्क ज्यादा नजर नहीं आता आपको बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। सो व्हाट यू आर स्टक विथ नाउ इज कल्चरल इश्यूज पे डिसाइड हो रहा है इलेक्शन। एंड सो बेसिकली कल्चरल इश्यूज यानी कंट्री का आइडेंटिटी, कंट्री की शिनाख्त के ऊपर ये इलेक्शन तय होगा। सो द बिग इश्यूज बेसिकली आर फॉर पीपल जो राइट में है, इमिग्रेशन, बिकॉज इट इज डाइल्यूटिंग द वाइट पॉपुलेशन, और लेफ्ट पे जो है इट इज द इशू ऑफ वुमेन्स ऑटोनॉमी। डॉक्टर खान, लेकिन अब जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख छापा और उनके एडिटोरियल बोर्ड ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प इज डेंजरस फॉर द अमेरिकन डेमोक्रेसी। नॉर्मली हमने देखा है कि कोई स्टैंड नहीं लेता है अमेरिका का पेपर, और अगर एडिटोरियल बोर्ड इस चीज को लिख रहा है, वो भी चुनाव के ठीक एक दिन पहले, व्हाट डज दिस रियली इंडिकेट? द एडिटोरियल बोर्ड हैज क्लियर एन आर्टिकल लाइक दिस वेयर दे आर सेइंग दैट ट्रम्प इज डेंजरस फॉर द अमेरिकन डेमोक्रेसी। हाउ वुड वन रीड this shift? So historically editorial boards, अमेरिका में हम लोग साफ कह देते हैं कि जो न्यूज एंड एडिटोरियल में फर्क होता है। The news people deliver unbiased news, supposedly.
and the editorials में opinion आ जाते हैं, and the media is generally very liberal. So there is a tradition of newspapers endorsing candidates. They endorse president से लेके local तक. In fact हमारा जो Delaware state का जो अखबार है उसके लिए मैं 5-6 साल तक I used to do the interviews with candidates and I used to endorse candidates. ये बट इस बार क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग इज द वॉशिंगटन पोस्ट विच सेज डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस है उनका स्लोगन, और पहली बार दे हैव नॉट एंडोर्स्ड एनीबॉडी, और वो भी इट केम एट द ऑर्डर ऑफ जेफ बेजोस जो ओनर ऑफ अमेजॉन है, ही ओन्स वॉशिंगटन पोस्ट एंड ही ऑर्डर्ड द एडिटोरियल बोर्ड दैट यू विल नॉट एंडोर्स एनीबॉडी दिस टाइम, और काफी मेजर रिपोर्टर्स वगैरह छोड़ के भी चले गए, दे हैव रिजाइंड फ्रॉम वॉशिंगटन पोस्ट विच इज वेरी रिस्की बिकॉज जर्नलिज्म एज अ फील्ड इज इन जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली हाई पेइंग जॉब्स इफ यू लीव द वॉशिंगटन पोस्ट, बट दे लेफ्ट बिकॉज ही इज अफ्रेड के ट्रम्प माइट बिकम प्यूनिटिव, यानी बदला लेगा, बिकॉज he says in his campaign कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा मैं अपने सारे दुश्मनों से बदला लूंगा, तो वॉशिंगटन पोस्ट हैज बीन वेरी क्रिटिकल, सो वो डर के जेफ बेजोस डिड नॉट एंडोर्स, तो पब्लिक कह रही ट्रम्प के जीतने से पहले ही डेमोक्रेसी, स्पेशली द पेपर विच टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, यहाँ तो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी मर गई ना, बिकॉज द न्यूज पेपर्स नाउ आर सेल्फ सेंसरशिप चल रही है, लेकिन इस बार इवन लॉस एंजलिस टाइम्स ने एंडोर्स नहीं किया किसी भी प्रेसिडेंट को, बट दैट इज बिकॉज द ओनर की बेटी सेड आई विल नॉट एंडोर्स कमला हैरिस बिकॉज ऑफ द गाजा जेनोसाइड, उसने लफ्ज जेनोसाइड भी यूज किया, सो देयर इज अ लॉट ऑफ, अमेरिका में काफी टर्मोइल चल रहा है, देयर इज अ जनरेशनल शिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40-50 से ज्यादा older हैं then you are very pro Israel, if you are below 40 you are very pro Palestine, so America is changing. I think the future of America is actually brighter than the present of America. मतलब ट्रम्प को छोड़ दें, लेकिन जो यंग बच्चे हैं जो कॉलेज में है वगैरह, दे आर मोर सोशल जस्टिस वॉरियर्स देन द करंट वन, दे आर मोर कंसर्न अबाउट, मतलब दे आर नॉट द काइंड हु थिंक दैट अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दे आर ashamed of America's human rights record at home, America's wars abroad, तो दे आर मोर, मेरी नज़र में दे आर मोर मॉरली सेंसिटिव पीपल, बट एज के साथ और पैसे के साथ यू नो लाइक मैं एक साहब को कन्विंस कर रहा था कि प्लीज डू नॉट वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2020 में, तो वो काफी अमीर आदमी है, आई डिडंट नो हाउ रिच ही वाज, ही सेड मुक्तदर यू आर आस्किंग मी टू लूज $5 million a year, so my vote, if I voted for Joe Biden, I will lose 5 million per year and maybe forever because वो वापस नहीं आएगा, तो मैं, so I realize okay भाई तू बहुत पैसे वाला है, मेरे लिए तो 100-200 का फर्क पड़ता है, it doesn't matter. So for some people it's also a major financial issue कि इसलिए सारे billionaires are leaning towards Donald Trump in this election. लेकिन आपने मुद्दे एक्सप्लेन किए, आपने मीडिया का स्टैंड बताया, लेकिन अब चुनाव के जो नतीजे हैं वो कितनी जल्दी आ जाएंगे? कई लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है वक्त लगे, कब तक चुनाव के नतीजे आने के आसार हैं? एक चीज ये है कि जो हमारे पास पोस्टर्स हैं ना नीलू, उन्होंने बगावत कर दी, और आई थिंक दे आर डूइंग ए डिससर्विस टू अमेरिका, दे आर डूइंग समथिंग कॉल्ड हर्डिंग, हर्डिंग कहते हैं इसको, यानी वो लोग सब मिलके एक ही चीज बता रहे हैं और दे आर प्लेइंग इट वेरी सेफ, इट्स लाइक सेइंग के if you ask somebody yes or no question and the answer is yes or no, तो आप क्या करेंगे, like you don't know what to make of it. तो सारे के सारे पोस्टर्स कह रहे हैं कि इन स्विंग स्टेट्स विच आर क्रिटिकल either Trump is leading by 1 or Trump is trailing by 1 या 0-0 है, तो बेसिकली दे सेइंग वी कांट कॉल इट, तो पिछले एक हफ्ते से all of us, like people like me who rely on public opinion polls to analyze, हमारे लिए blind हो गए हम लोग, so we don't know what is actually happening. Is actually Kamala Harris leading by 3-4 points? बाज लोग कह रहे हैं कि this is going to be a big swing, और 319 and 219 का प्रिडिक्शन है, अगर 4% का गैप आ गया तो शी विल विन बाय 100 इलेक्टोरल वोट्स, और अगर 4% का इधर वोट आ गया तो ट्रंप जीत जाएगा, लेकिन 4% इज अ वेव, इलेक्शन में 5% को वेव कहते हैं. Dr. Khan, I'm just imagining a scenario which is of course very very tough because you're saying that there's a very close race which we are witnessing. But supposing if Trump loses,
Are we going to see a repeat of what happened in 2020, those insurrection, on the Capitol Hill? What can we really expect, and what are the dangers which America could see? So if Kamala Harris loses and Trump wins, तो कल अगर हम 24 घंटे के बाद when we talk, we will be talking about the implications of Trump's win. Right. But if Trump loses, then we may not have a result for a long time, because if he doesn't concede, then we have to certification के लिए इंतजार करना पड़ेगा. और अमेरिका में elections are very decentralized, so it is county based elections, स्टेट एंड काउंटीज. जैसा कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना स्टेट में, Mhm. वो लेवल पे. सो एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड द पीपल हु सर्टिफाई आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स, दे आर इलेक्टेड पीपल. तो ट्रंप ने पिछले 4 साल में ही गॉट सम ऑफ हिज पीपल गॉट इलेक्टेड टू दीज पोजीशंस in states. So what they will do if Trump says that I'm not conceding the election has been stolen from me, then some of these people in swing states will not certify the election. तो उनको फोर्स करने के लिए डेमोक्रेट्स विल देन हैव टू गो टू कोर्ट्स. तो अब वो कोर्ट्स में ये केसेस चलेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आई थिंक द कोर्ट्स भी अपना रोस्टर क्लियर करके दे आर वेटिंग. एंड दोनों पार्टीज ने हजारों लॉयर्स को ऑन रिटेनर अभी रख लिया है. सो दे आर एक्सपेक्टिंग ए मेजर लीगल बैटल. सो Mhm. पब्लिक इज होपिंग, मतलब एज एन अमेरिकन, who for me the two parties have become very similar on many issues, एक्सेप्ट जो मैं आपको कल्चरल इश्यूज के बताया, जिसमें मेरे स्टेक्स थोड़े कम हैं एज ए ब्राउन मैन. सो फॉर मी द टू पार्टीज आर इक्वल. सो आई डोंट माइंड ट्रम्प विनिंग टू प्रिवेंट a huge breakdown of democratic crisis, because Trump has announced कि third time वो नहीं भागेगा. He can't run again if he has 2 terms. But if Kamala Harris wins with a small margin, if she wins, then she should win by a big margin. मतलब वो ना तो स्विंग स्टेट्स भी जीते और थोड़े ट्रेडिशनल जो रेड स्टेट्स है, जैसा कि आयोवा है, उसको भी स्विंग कर लें, जैसा कि ओबामा हैड वन फ्लोरिडा व्हेन ही बिकेम Yes. प्रेसिडेंट. रोनाल्ड रेगन का अगर आप मैप देखें, तो सिर्फ एक स्टेट मिनेसोटा छोड़ के उसने पूरे 49 स्टेट जीते थे रोनाल्ड रेगन से. वी डोंट एक्सपेक्ट कमला हैरिस टू विन लाइक दैट, बट इफ शी विंस विद अ स्लाइटली बिगर मार्जिन, एक दो ब्लू रेड स्टेट्स अगर वो जीत जाए, देन आई थिंक ट्रम्प विल नॉट फाइट. कितनी चांसेस हैं कमला हैरिस की कि वो एक अच्छे मार्जिन से जीते, और कई स्विंग स्टेट्स भी अगर वो जीतते, कि उसके क्या चांसेस आपको लगते हैं? देखिए, स्विंग स्टेट्स के जैसा मैंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स शोज दैट दे आर वेरी क्लोजली टाइड 1%. लेकिन हिस्टोरिकली पहले लोग ना शर्माते थे ये कहने के लिए कि मैं ट्रम्प को वोट डालूंगा. तो इमेजिन आप कोई पढ़े लिखे प्रोफेसर से पूछ लिए हु आर यू वोटिंग फॉर, तो either he will not answer the question or he will say Democrat, but he'll go and vote Trump. you know Right. इट्स लाइक सेइंग कि आपने मोहल्ले के गुंडे के लिए आप वोट डाल रहे हैं, तो बोलेंगे थोड़ी कि मैंने उसको वोट डाला है. इट्स लाइक दैट. सो देयर इज दैट इशू, जिस इस वजह से 2-3% अंडर पोल करता था ट्रम्प इन 2016 एंड 2020 बोथ. वी डोंट नो वेदर दैट फेनोमेना स्टिल एग्जिस्ट, कि आर पीपल स्टिल शाय. तो टेलीफोन पे जब उनसे पूछते हैं यू आर ए लाइकली वोटर, हु आर यू गोइंग टू वोट, आर दे आंसरिंग द क्वेश्चन ट्रूली इवन दो द फोन कॉल इज सॉर्ट ऑफ एनोनिमस. सो वी हैव दैट सिचुएशन. तो उसमें ऐसा लगता है कि, तो मैंने एक पोल अपनी क्लास में कर लिया. मैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता हूँ अंडर ग्रेजुएट्स को, 26 बच्चे हैं. तो क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा चले इलेक्शन करते हैं, व्हाट आर यू सेइंग. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज. पूरे के पूरे 26 के 26 had the same answer. They said Kamala Harris will win the popular vote, Trump will win the electoral college and he will become president. तो यहाँ पर एक नेट सिल्वरमैन है, मैं उसको अमेरिका का प्रशांत किशोर कहता हूँ. सो ही इज लाइक ए पोस्टर एक्सपर्ट. ही सेइंग कि his brain says Kamala Harris, his gut says Trump. Because of the unpredictability and inaccuracies of polling. But अगर ट्रम्प हार जाता है ना, then I think America is going to go through, क्या कहते हैं वो, सीता का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट बाय फायर. परीक्षा, अग्नि परीक्षा. अग्नि परीक्षा होने वाली है अमेरिकन डेमोक्रेसी की, अगर ट्रम्प हार जाता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ हेट. कंट्री बहुत डिवाइड हो गई है, बाई पार्टीसन. 2012 से
पीपल थॉट कि ओबामा का इलेक्शन विल एंड रेसिज्म, उससे ज़्यादा उल्टा हो गया, इट इंक्रीज्ड रेसिज्म। और राइट। जैसा मैं कहा ना, पीपल हैव दिस एग्जिस्टेंशियल फियर, इसलिए कि मेरा मुल्क मेरे हाथ से चला जा रहा है, एंड दैट इज द बिगेस्ट वरी, बिकॉज देन दे विल से ठीक है डेमोक्रेसी नहीं रही तो नहीं रही, लेकिन मेरा मुल्क तो मेरा रहेगा, एंड दैट इज द फियर। स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर देखते हैं, और जो विदेश नीति है, चाहे वो भारत की हो चाहे चाइना की हो, वो किस हिसाब से बदलेगी? क्या कुछ बदल सकता है अगर कमला हैरिस जीती है और अगर ट्रंप जीते हैं, दोनों के केसेस में? अगर कमला हैरिस जीती है तो देयर विल बी सम स्लम्प, अ लिटिल बिट। ओके। अगर ऑलरेडी जिस तरह से ट्रेंड आ रहा है, पीपल आर थिंकिंग के द मार्केट थिंक्स के ट्रंप इज विनिंग। सो जिस तरह से मार्केट में ट्रेंड्स आ रहे हैं, दे फील दैट ट्रंप इज विनिंग। और जो बेटिंग हो रही है नेट पे, उस पे भी ऐसा लग रहा है कि सो दे हैव, बट दीज आर अनप्रेडिक्टेबल, दे हैव नेवर बीन ऑलवेज राइट, दे हैव आल्सो बीन रॉन्ग इन द पास्ट, स्पेशली 2016 में नियरली एवरीबडी थॉट, मुझे याद है हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा मेला करते थे हम लोग इलेक्शन की रात में, कोविड ने ख़त्म कर दिया, तो वी यूज्ड टू सिट देयर एज एक्सपर्ट्स एंड टॉक टू 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स होते हैं थे। सो मैं 9 बजे रात तक आई वाज सेइंग हिलरी क्लिंटन जीत रही है, आई वाज सो एम्बैरेस्ड, जिंदगी में उतना एम्बैरेसमेंट कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि ट्रंप ने ना सिर्फ हिलरी को हराया, उसने रिपब्लिकन पार्टी को भी हराया, बिकॉज द पार्टी वाज अगेंस्ट हिम एट दैट टाइम, और पॉलिटिकल साइंस को भी हरा दिया उसने क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट वे completely wrong in 2016. So इस बार I don't know, it is very close to call, मतलब I agree with this statement कि my brain says Kamala Harris but my gut says Trump. और बेसिकली सबको अल्सर्स हो गए, स्टमक अल्सर्स। जी, आपकी। हाँ, डॉक्टर खान, लेकिन फिर कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कल शाम तक रिजल्ट आएगा या बहुत मुश्किल है? और आपने जैसा कहा कि लीगल बैटल की तैयारी तो ऑलरेडी शुरू कर दी है दोनों साइड्स जी। ने। तो हम क्या एक लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसकी पॉसिबिलिटी आपको क्या ज़्यादा नज़र आ रही है? सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है इलेक्शन में बिकॉज ऑफ द टाइम स्लॉट। तो देखिए, 8 बजे 9 बजे तक यहाँ पे पोलिंग बंद हो जाती है, लेकिन ऑल 10 बजे तक काउंटिंग से ट्रेंड्स पता चल जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप कैलिफोर्निया में हैं और आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और रास्ते में रुक के आप वोट डालना चाह रहे हैं, एंड यू टर्न द रेडियो ऑन एंड देन ईस्ट कोस्ट इज ऑलरेडी डिसाइडिंग, एंड इफ यू थिंक योर कैंडिडेट इज लूजिंग, यू आर थिंकिंग यार मैं ट्रैफिक में कहाँ फंस जाऊँ, आई विल गो होम स्ट्रेट। हुँ। And if your candidate is winning, you say, why should I care? He's winning. So, and then you go home. तो उससे क्या हो रहा था कि ये अर्ली काउंट एंड अर्ली ट्रेंड से ऑन द ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे वोटर सप्रेशन हो जा रहा था अनइंटेंडेड। अब कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी सो क्लोज टू कॉल because they're going to keep saying कि 1% का margin, that is what they're expecting कि हर counties में it's going to be like this, you know, so very close, very close, very close, that there will be heavy voting on the west coast also because it will not be decided. दूसरी चीज ये है कि हर county में the rules are slightly different. So some people say कि अगर margin सिर्फ 100 वोट का है, लेट अस से कि आपको 560 वोट मिले और मुझे 501, तो ऑटोमेटिकली रिकाउंट हो जाएगा। So there has to be like a margin of 100 or 200 or 300 votes. Then they will certify that, or they will keep it for certification, and they will declare the winner of that particular constituency. So if the election is as close as we think it is, then double count hoga har jagah. So that will also add to time. Plus there are more votes to count. और इस बार अभी तक, मैं अभी सुबह में चेक कर रहा था, 85 million people have already voted. So that is the good thing, but they are not counting it. They will start counting everything later. लेकिन there's, राइट। और उसमें काफी मेल इन बैलेट्स भी हैं, so that makes it a little complicated. यानी कि अच्छा खासा टाइम लग सकता है, और हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि कल शाम को ही हमें रिजल्ट्स मिल जाएँगे या देखने को मिलेगा। अगर कमला हैरिस आती है तो कल पता चल जाएगा, because if it is very close and still lose within 24 hours we will know कि क्या सीन हो रहा है। But अगर ट्रंप हारते हैं तो then it could take months, and I'm worried कि January 20 is when they usually like to switch the president.
तो जनवरी 20 से पहले इट हैज टू बी डिसाइडेड. एंड इफ देयर आर कोर्ट बैटल्स, जैसा कि आपको 2000 में याद है, इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था इन फेवर, और एल गोर एक्चुअली could have protracted it and taken the vote to the Congress. लेकिन he decided to give it up. मतलब वो काफी वो अनसेल्फिश पॉलिटिकल थिंग किया था एल गोर. बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टाइम, मतलब अमेरिका की पिछले 20 साल से ना अमेरिका के स्टैंडर्ड्स पॉलिटिकली गिरते ही जा रहे हैं. मैं आपको बताता हूं कि जब पहली बार मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ा था कि जॉर्ज बुश क्या जो वोट हुआ था एल गोर के साथ, जो डिबेट हुआ था, तो व्हाट दे डू इज दे यूज द लैंग्वेज वगैरह एंड कैलकुलेट के किस लेवल का है. तो 8वीं जमात का लेवल था वो. The debates level was 8th grade. I was so shocked. You know, with Obama on the podium, the debates had fallen even below that level. यानी मिडिल स्कूल के लेवल की डिबेट्स हो रही हैं यहाँ पर. सो देर इज ए डिक्लाइन इन लीडरशिप क्वालिटी. यानी फॉर एग्जांपल आप जो बाइडन को देख लें, इतना हिपोक्रिटिकल आदमी, जेनोसाइड, जो झूठ बोलते रहता है अपनी पब्लिक को. और सो देयर इज ए क्वालिटेटिव डिक्लाइन इन अमेरिकन लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स, और कल्चर बहुत पोलराइज्ड हो गया. सो everybody is fearing कि हमारे vision of America is at risk. So they are willing to bend the rules to save their vision of America. चलिए, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है और कल शाम तक क्या कोई डिसाइसिव रिजल्ट हमें दिखता है. और जैसा कि डॉक्टर खान ने कहा कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाए, और अगर लोग चैलेंज करेंगे तो फिर कोर्ट्स किस तरीके से फैसला सुनाएंगी, कितनी जल्दी सुनाएंगी, तो देखना होगा. लेकिन आज ये एक बड़ा दिन है अमेरिका का. जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय अमेरिका में चुनाव ऑलरेडी चल चुके हैं, वोटिंग चल रही है, और कल शाम तक यानी कि इंडिया टाइम हम इस समय चुनाव के नतीजे शायद डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन जीत रहा है, कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप. थैंक यू सो मच डॉक्टर मुक्तेदार खान फॉर जॉइनिंग ऑन माय चैनल. It was really wonderful to talk to you and get a slice, in fact, a complete slice of what is really happening as far as American elections is concerned. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye.